welcome to our special presentation, Porous Borders, Bogus Voters. The Bihar Special Intensive Revision of Voter Roll has dominated headlines and united India's opposition like nothing before. But beyond the claims, even the counterclaims and attacks, lies a reality. What's that reality? Clean voter rolls are the fundamentals of free and fair elections, which in turn is bedrock of the democracy. But it is this very bedrock now that's been shaken up. And CNN News 18 in this explosive report from Ground Zero tells you why SIR is almost an SOS call for Indian democracy. Let's bring you a ground report. इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। India and Nepal have long shared civilizational ties commonly known as Roti Beti Ka Sambandh, ties which have resulted in free movement of people across an almost open border. But it is this porous border which has created one of the biggest threats to the sanctity of India's poll processes. My video journalist Ravi Ranjan and I are hardly 2 meters apart right now. While he is standing in Nepal, I am right now in the Indian territory. This is the nature of porosity when we talk about the international border between India and Nepal. And here you can see is an open field. The man with that red helmet on a black bike, the man on the blue two-wheeler, they're all moving from Nepal to India. Now imagine how easy would it be for any unidentified person to walk into India via Nepal. क्योंकि सिक्योरिटी इशू तो जो है ना, मान लीजिए 2002 से पहले जब एसएसबी नहीं थी तो थोड़ा सा समस्या थी, लेकिन 2002 के बाद बॉर्डर पर एसएसबी आने के बाद हम लोग सुरक्षित ज़रूर हो गए हैं। लेकिन सुरक्षित में भी वहाँ से जो कुछ लोग नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान से, वो सब जो आके रह रहे हैं, अंदर सुरक्षित नहीं है। बाहरी बॉर्डर से हम लोग सुरक्षित हैं। आप बिहार में इलेक्शन आने वाला है, आप लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ऐसा अगर कोई बाहरी आदमी कागज़ बनवा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उस पर क्या आप लोगों की प्रक्रिया है? हम तो अपनी जानकारी में है कि हम देख रहे हैं कि बॉर्डर से सटे हुए लगभग 100-200 लोग को हम लोग जानते हैं कि उसको इंडिया का आधार बना हुआ है। तो जब कोई आधार बना लिया तो स्वाभाविक बात है, आधार से उस समय वोटर लिस्ट बनता था। अब आधार दिखाइए, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाइए, तो उससे बहुत सारे लोग का नाम चढ़ा है। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ धड़ल्ले से उनका आईडी बन रहा है, आधार कार्ड बन जाता है पैसा दे करके, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। वो पहले आते हैं कुटुंबी जुड़ने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे अपना मजदूरी करते हैं, धीरे धीरे यहाँ आकर के बस जाते हैं, तो उसका प्रभाव यहाँ के जनमानस पर पड़ रहा है। जैसे सर हमारे बोले अभी है ना, जो यहाँ के निवासी हैं उस सेम बेसिस पे वो लोग आते हैं, यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं, रिलेशन में आते हैं, वो लोग आके यहाँ पे बस जाते हैं और धीरे धीरे हमारा रोजगार से लेकर देश का सुरक्षा तक सब में चूक जो आज हो रही है, बस यही चीज़ है कि आगे का जो अधिकारी है, जब तक आगे का अधिकारी नहीं मिला हुआ था उनसे उनका आधार कार्ड कैसे बन रहा है। हमारे निगरानी में कई आधार सेंटर ऐसा है कि जो है ना, हम लोग जानते हैं कि 5-5 हज़ार रुपया लेके आधार बना रहा है, लेकिन सिस्टम सोया हुआ था। आज चुनाव आयोग जागा है, लगता है कि कुछ अच्छा होगा। With assembly polls approaching in Bihar, the police and forces guarding the border are on high alert, and repeated drives are being conducted to ensure that no such fake document comes to any use in these upcoming elections. All right, so as we all know, Anvit Srivastav has brought us that exclusive investigation. Anvit also joins us live on the broadcast. Anvit, what's very clear from your report is that infiltration is causing this huge threat to the demography of our country. Having said that, you were at the Bihar-Nepal border. What is it that you observed, especially when it comes to the infiltration threat? Why are we not able to sort of clamp down on it? See, Akanksha, western borders of India are very different from the eastern borders. Last year we were in Bangladesh, at the Bangladesh border, and this time we were at the Nepal border, and these are similar in nature. So Nepal border, where we were in Bihar this time, in Madhubani, Araria, Kishanganj,
this is completely an open field, and people are on both sides are moving in and out. SSB certainly is deployed, but the area, the terrain of the area is such that not all the areas are fenced. There is no fencing at all. There are pillars of border pillars demarking the borders, but at some places they are even not the pillars. So the neighbors, the villagers who live there, they have no demarcation of that Nepal begins from this side. So there should be any checks from anyone going into Nepal or vice versa coming from Nepal into India. SSB does random checks because the movement, the amount of movement and the volume of people that move daily in and out of Nepal and India to Nepal is so high that it is humanly impossible for SSB to keep a check on each person passing or each vehicle that is going through. Even though there are border checkposts like Jogbani where we also went, so there are border checkposts also. But other than border checkposts, the villages are such that one village in India lies also in Nepal and also in India. In fact, there are houses in some areas which half of the house lies in Nepal. So this has been, these villages have been formed decades back, and then when the demarcations were made, these villages are half falling in Nepal and half in India. So there are problems, but since decades, people of Nepal and India have had very friendly relationships, and they have been going into on daily basis. People go there, people have their daughters married into Nepal. Nepalese come to India for trade and for other reasons as well. So this daily movement, it is certainly becoming it has become, in fact, over the years, a drastic challenge for any force to keep an eye on these people, because these are open fields and there are no exact demarcations, and therefore people do keep moving in and high volume and each day and every hour. Anvit, it's very interesting that you highlighted the challenge, particularly in India's east, and that's why I want to draw your attention to how the Election Commission has also notified the country with regards to the cancellation of these illegal voters that they've done, particularly in East Champaran or even Araria. So give us a sense of how alarming has been the increase in the number of these illegal voters, according to all the reportage that you've managed to gather. See, Akansha, one good thing is that our coverage is not just based on what we saw, but also we have the data, and data is from the Election Commission website, and it clearly suggests a drastic rise in the number of voters registered in these districts that are bordering Nepal, in particularly in state of Bihar, because elections are approaching there, in the last 5 to 6 years. So when we compare the data of Election Commission from 2019 to 2025, that's the latest data, there is a drastic rise. I would quote some numbers. In Araria district that shares border with Nepal, now there are 20,82 voters registered, which in 2019 was just 14,69,000. This is a rise of 41.69% in just last 6 years. If we talk about Madhubani, there are 33.76 lakh voters registered now, which is an 89.6% rise from 6 years back. In 2019, it was 17.8 lakhs. So similarly, Sitamarhi has seen a 51.16% rise, and East Champaran and West Champaran, if we talk about 126% rise in East Champaran, and West Champaran has seen 71% rise in the voter registration. So this rise, when we spoke to the locals, when we spoke to the social commentators, they have to say that this rise is not normal, is what they believe. They say that a lot of infiltration has been happening since decades, and now when the people these people who infiltrate, these are foreigners. We are not talking about any particular community, but these are people who are not Indians, and when they move into India, what locals have been seeing from decades, they say that they first stay on the bordering areas. No man's land is heavily encroached. They stay there, and then they gradually move in, get their documents made through contractors and through their local contacts, and then they are participating in democratic events like elections in India, which means a lot for the people, for the local people, to bring change what they desire. So, and when that electoral outcome is being influenced, that is their worry right now. Many thanks to you, Anvit. In fact, going to request you to continue staying with us. We have so much to discuss on this exclusive report that you've brought us. On that note, let me also bring in our guest. I'm in fact joined in by Avinash Kanodia, who's a social worker. Thank you, Avinash, for joining in. Taking that point that Anvit has just made right now, take us through how have you observed this rising threat of infiltration? Because as Anvit highlighted, that you're not looking at Indians or illegal voters within the country, you're looking at infiltrators who do not have citizenship of the country. They are now being included in India's voter base. Ma'am, kindly talk with me in Hindi.
श्योर अविनाश, आपके हिसाब से जो आपने ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से हमें ज़रा बताइए कि ये कितना बड़ा एक थ्रेट होता जा रहा है, जहाँ पे हम इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को अब अपनी कंट्री में उन्हें एक सिटीजनशिप की ही नहीं, एक वोटर का भी सम्मान दे रहे हैं। जी, ये यहाँ पे लोकल जो भी जनप्रतिनिधि है उनकी मिली भगत से ये इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। जो लोकल स्तर के, जैसे सबसे ग्राम नीचे के स्तर पे होती है ग्राम पंचायत, वहाँ पे जो मुखिया होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उनके द्वारा अपनी वोट की राजनीति के कारण जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं, उनके जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर किसी भी तरह का सरकारी प्रमाण पत्र वो लोग बना देते हैं, और जिस कारण इस तरह से वोटर बढ़ रहे हैं, जो हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरे की घंटी बजाती है। आपने कहा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये एक खतरा है, पर अभी हमने जिस तरह अपने देश में SIR एक्सरसाइज के ऊपर जिस तरह का पूरा एक पॉलिटिकल फेस ऑफ देखा है कांग्रेस पार्टी और पर्टिकुलरली रूलिंग गवर्नमेंट, ख़ास तौर से बीजेपी के बारे में बात करें तो हर कोई इस बात को या मुद्दे को इलेक्शन रिजल्ट तक रिड्यूस कर दे रहा है, पर एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि ये पॉलिसी मेकिंग पे भी किस तरह इम्पैक्ट होगा, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं इन इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो भी सरकार की जो योजनाएं होती है वो हमारे लोकल लोगों को बहुत कम मिल पाती है। उससे ज्यादा वो जो बाहर के लोग आए हुए हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स के नाम पे सारा डॉक्यूमेंट्स फुलफिल रहता है, वो सभी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं। लेकिन जो इंडिया के जो इस जगह के जमीनी लोग हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो पाता है, जो कि वो सभी लाभों से वंचित रहते हैं। तो डायरेक्टली कह सकता हूं मैं कि सरकार के जो भी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को जमीन पे लाने के लिए इन सभी चीजों पे रोक लगाने की आवश्यकता है। तो आप तो कह रहे हैं कि सरकार को रोक लगाने की आवश्यकता है, पर जिस तरह का दोषारोपण अभी चल रहा है खासतौर से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन को रोका कैसे जाएगा? इलेक्शन कमीशन अपना जो वर्क कर रही है वो बहुत अच्छी तरह से कर रही है। विपक्ष ने आज तक सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की राजनीति की है, लोगों को तोड़ने की राजनीति की है, जिस कारण उनका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक टूटता नजर आ रहा है। इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं। अविनाश जी, आपको बिहार का कितना आइडिया है? हमें खास तौर से क्योंकि हम देख रहे हैं बिहार अभी बहुत ही पॉलिटिकली हीटेड टाइम के दौर से गुजर रहा है, आने वाले दिनों में वहाँ इलेक्शन भी होगा, तो बिहार में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का कितना बड़ा थ्रेट हो रहा है? खासकर हमारे इलाके सीमांचल में अभी अनवित जी भी यहाँ आके गए हुए थे और उन्होंने भी रिपोर्ट बनाई, जिस पे हम लोग अभी डिबेट कर रहे हैं जी। उनको मैंने भी बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे दिखाया था मैंने, तो जो भी यहाँ पे जो देख के वो गए, वो साफ तौर से यही था कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उन लोगों को बसाया गया। जो यहाँ रोगनिया है, बांग्लादेशी वोटर है, उनको सिर्फ और सिर्फ किसी एक खास पार्टी को लाभ पहुंचाने के कारण उनको यहाँ लाके बसाया गया। जो आज उनका जब नाम कट रहा है या उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो खलबली मची हुई है बिहार की राजनीति में। इसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी जी अधिकार रैली कर रहे हैं, पूरा बिहार घूम रहे हैं अभी, सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर। जी, मैं समझ रही हूँ। हमारे साथ बने रहिए अविनाश एंड Anvit, going to request you to continue staying with me. Let's also take our viewers through why this is such a massive threat when you talk about infiltration, as Anvit highlighted, particularly in India's east, especially when you look at Bihar, which is going to be going through assembly elections. This is now becoming a burgeoning threat. The concerns, of course, are illegal migration. Why is it happening? Because of forged documentation. The local governments, even the panchayat levels, are in fact involved in forging of these documents. Bogus voters are also then leading to a massive demographic change. And how is that now going to impact our country? It is going to impact the policy making of our nation. Anvit brings you another ground report. In fact, the threat of infiltration, this along the 600-kilometer international border in Bihar, is real and a growing one. The free movement across borders is creating a nightmare for security agencies, with infiltrators obtaining forged Indian documents with ease. That's subsequently paving way for their participation in elections, which can then have detrimental effect
on not just the polity but also the policy of the nation, why there has been many claims and counterclaims around the Bihar draft roll, which saw omission of 65 lakh names by the Election Commission. A reality check from the ground now reveals that this Herculean effort is a need of the hour. The rush that you see I'm surrounded with is at Jogbani border check post in Bihar at the Indo-Nepal border. But the volume of people you see around me, is it humanly possible to check each one of them and to identify what they could be carrying? For exactly that mammoth task, we have the SSB, the Sashastra Seema Bal, deployed here. The size of people moving in and out, the regular seizures and the vulnerability of the open border clearly demands of technological upgradation and introduction of equipment that would make their task easier. As many people will pass from this border with commodities, they are all checked and their identities are checked. No one can pass through this border, even despite the heavy volume of people moving, without confirming their identity. We'll try and talk to one of the officers and find out what are the procedures and what are the challenges here at this area. सर, यहाँ पे आप लोग का चेकिंग वगैरह रहता है रेगुलर राउंड द क्लॉक, क्या चैलेंजेस रहते हैं और क्या आप लोगों का मैंडेट है यहाँ पे? मैंडेट यही है कि नेशनल सिक्योरिटी के में कोई भी ऐसी चीज़ ना चली जाए जो नेशनल के लिए हैम्पर करे, और हमारी ये है कि आप चेक करके ही सारी चीज़ें जाएँ. Monitoring this mass of humanity moving from one side to the other presents multiple challenges and implications. Apart from the regular seizure of contraband, narcotics and weapons, this movement results in many infiltrators never returning and settling down here itself. The change is startling, particularly in the so-called no man's land along the border. सर, इधर जनसंख्या में भी काफ़ी बदलाव आए हैं बॉर्डर पे, जैसे काफ़ी लोग आके रह रहे हैं बाहर से, तो जनसंख्या में भी काफ़ी बदलाव है. ये तो है, जनसंख्या बढ़ा है. इसी वार्ड में जो था ना, मतलब वो देखते हैं करीब 5 साल के दरमियान में कम से कम 300-400 वोटर बढ़ गया है. हाँ, ये सब कोई देखने वाला नहीं है. और नेता सब जो क्या वोट लिया, बात खत्म हो गया. पहले 5 साल पहले लगभग 1000 वोट कम था, अब 1000 वोट ज़्यादा बढ़ गया. फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ रहा है अभी. सब ये बाहरी सब वोटर सब है. नेपाल का आदमी को इंडिया का नागरिकता बना लिया है. इंडिया का आदमी नेपाल का नागरिकता बना लिया, तो उसमें तो वोट ज़्यादा बढ़वे करेगा. CNN News 18 made its way to Dumaria village, one of the locations flagged for heavy encroachment in no man's land. Sources reveal that residents in these settlements not only shelter infiltrators in exchange for money, but in some cases even marry off their daughters to foreign nationals, effectively granting them lifelong legitimacy and protection. The sights seen on the ground are clearly reflected in the surge witnessed in voter rolls. Data from the Election Commission and other portals actively maintaining voter data show a clear surge in the number of voters in Bihar's border districts, while districts like Araria witnessed a 41% spike from 2019. East Champaran alarmingly showed a 126% spike in voters since 2019. In comparison, districts like Nalanda and Munger in the interiors of the state witnessed a significant drop in voters compared to 2019. The data tells a story, a spike which is almost Himalayan in its rise. No wonder that the poll panel during its intensive revision exercise made some extensive cuts to the voter rolls in these regions. While Araria saw a reduction of over 1.5 lakh voters in the revised 2025 rolls, East Champaran saw the voter count plummet by over 3 lakh voters. मज़ेदार बात है कि सीमांचल में जो न्यूनतम मजदूरी तय है उनसे आधी कीमत पर ये लोग लेबर के रूप में काम करते हैं, और धीरे धीरे ये लोग उस बस्ती में रच बस जाते हैं और फिर वहीं की लड़की से शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद जो है उनका रिकमेंड जो है उनके फादर इन लॉ हो या मदर इन लॉ हो, और फिर उनका जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि है वो लोग उनका रिकमेंड करते हैं, और उस रिकमेंडेशन के आधार पे जो है
उनका आधार कार्ड हो या वोटर आई कार्ड हो वह बन जाता है। हम लोग 2003 का वोटर है, वोट बैलेट है, लेकिन लड़का सब उसके लिए इतना परेशानी है कि मतलब कभी कहता है कि जो मतलब ये वंशावली बनाइए, कभी कहता है कि जो मतलब आप जाति लगाइए, कभी निवासी लगाइए, कभी पासपोर्ट लगाइए। 6 महीना काम करते हैं, 6 महीना कागजे पत्र लेकर के घूमते रहते हैं। आज ये नियम, कल वो नियम, एक से एक नियम लगा ही रहता है। मेरा 2003 का वोटर आईडी है तो हमारा एक्सेप्ट है, अब मेरा बच्चा का अगर नहीं है तो उसको 1947 में जाना पड़ेगा। ये कौन सा नियम है? Driven by vote bank politics or systematic failure, heavy encroachments along the international border between India and Nepal in the state of Bihar pose a serious and undeniable national security threat. With elections around the corner in Bihar, these settlements also have a potential to influence electoral results, and what happens in this region today will quietly reshape its future tomorrow. With video journalist Ravi Ranjan, this is Anvit Shrivastava from Bihar for CNN News 18. All right, Siddhant, in fact, Anvit is back with us. Anvit, as we draw this entire discussion to a close, I want you to take us through the key takeaways of your entire investigation at the Bihar-Nepal border. Some interesting revelations have now come to the forefront, especially when you look at this particular border area and Simanchal. See, Akanksha, we started our journey from Araria and we traveled towards Kishanganj, and we went to all the villages, Dumaria, Dumarbana, and even parts of Kishanganj, and we saw that the entire stretch of this border is completely porous. People have been coming in and coming out, and when we spoke to them, some of them we spoke to off camera as well, and they had said that they had been doing this for years. And when you see that terrain, it's very difficult for any security agencies to manage the flow, inflow and outflow of these people in those areas. They have been doing this for years. Some people have their shops in Nepal, they live in India, some have their relatives there, so this inflow and outflow is very common and has been happening since years. It's just that over the past few years it has taken a dangerous shape because third party interests have come in. Some outfits who have their interest in hampering India's national security or its electoral practices, they have come into play, and then they have been using these people. A lot of people, foreigners from other states like be it Bangladesh, be it Nepal, be it China, be it Bhutan, and even Myanmar, they have been coming in through this border because everyone knows in this region that this border is the most porous border. Not just people, but be it narcotics, weapons, and fake currencies. All kinds of seizures are made here by the police and the SSB, and they have been effectively doing it for years. So everyone in this region knows that this is the most porous border that India shares with any international boundary, and this is why people choose this border. We saw our social commentator Rahul Thakur, whom we had met there, and he broke it down for us in detail. He said first these people come in as laborers, they work there at half the rates of labor, and then when they settle in that area for some years and they are known and they are familiar to that area, then with the help of their contractors or people known to them in these years, they move on the inside areas of India, and then they get their documents made based on recommendations from their contractors and the document they managed to procure in these years. Then once the Aadhaar or voter ID is made, then you are an Indian citizen, then you can roam anywhere in India, and there will be no right to any government or to any authority to snatch that right from you. And if it has to be done, it has to be done through a process, and that process will take time. So this is the process how they come in, they get the documents made, and then eventually some of them are also as alleged by locals that they are also participating in electoral practices in elections, and then it certainly influences the electoral outcomes in these areas. All right, many thanks to you, Anvit, for bringing us that exclusive ground report. But before I let you go, let me also take concluding thoughts from Avinash Kanodia, who continues to stay with us. Avinash ji, तो जो अभी भी हमारी जितनी भी वार्तालाप हुई अनवित के साथ, उससे ये साफ-साफ उभर के आ रहा है कि एक सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थ्रेट नहीं है, आप नीति निर्माण की भी अगर बात करें तो वो भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रही है। तो इस तरह का जो खास तौर से बिहार के बॉर्डर पे देखा गया है, ये जो इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है, इसको एड्रेस करने के लिए आपको क्या चुनौतियां अभी आगे दिख रही हैं? चुनौती सबसे ज्यादा तो चुनौती आंतरिक सुरक्षा की होगी, क्योंकि ये लोग यहाँ आते हैं, उसके बाद अपने देश के कुछ और लोगों को बुलाते हैं और बहुत तरह की गतिविधियां जैसे आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई है, उसके बाद आपको ये जो मवेशी तस्करी का होता है, उसके बाद यहाँ से उज्बेकिस्तान अदर कंट्री के लड़कियों को इधर से इंडिया सब भेजा जाता है। तो इस तरह की समस्याएं जो है यहाँ की युवा पीढ़ियों को भी बहुत तरह से ड्रग्स आदि की सेवा से भी
उन लोगों को ड्रग्स आदि उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आने वाले समय में ये बहुत ही खराब नेशन को निर्माण करेगा। ये यहाँ के स्थानीय युवाओं को गलत दिशा की ओर प्रेरित कर रहा है। जी अविनाश जी, हमारे साथ अपने ये इनसाइट्स शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेनी थैंक्स टू यू अनवित ऑल्सो फॉर ब्रिंगिंग अस दैट वेरी इंसाइटफुल ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम बिहार। With that, we're slipping into a quick break. Stay tuned to CNN News 18 as we return with the latest.